सोचूं के मिलनी ते भूलांगा की तेरी तां गल्लां च शायरी वेखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी। टाइगर जिंदा है में क्या रिलेट हुआ आपको, क्या कनेक्ट हुआ? Working with Yashraj Films was a dream because for 2 years I used to have chai outside of Yashraj and keep staring at their logo कि एक दिन ये दरवाजा मेरे लिए भी खुलेगा। पागलपन जरूरी नहीं है आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल जरूरी है ना? जावेद साहब का एक वीडियो देखा था मैंने रिसेंटली where he says कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप में कुछ कमी है। नेटवर्थ के बारे में सोचते हो? नहीं भाई, नहीं देखा नहीं आपने कभी गूगल सर्च नहीं किया परेश पहुंचा नेटवर्थ? नहीं भाई, करते हैं आज अभी करते हैं। बताओ मुझे। $11 मिलियन बोल रहा है भाई, कितना होता है? $11 मिलियन 100 करोड़ रुपए होते हैं। परेश भाई, चाय कैसे पीते हो आप? चाय अदरक इलायची और आधा दूध आधा पानी। आधा दूध आधा पानी। हाँ, और अच्छे से उबली हुई। आई थिंक चाय का असली कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर तब दिखता है जब यू हैव द पेशेंस टू लेट द चाय बॉयल फॉर इट्स प्रॉपर टाइम। मतलब वो कलर में दिखना चाहिए कि हाँ ये अब तैयार है। व्हाट शुड बी द आइडियल कलर ऑफ अ चाय? गेरुआ। अच्छा क्या बात है, मतलब दिस एनालिसिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। Yeah, I mean it's different for everybody. Some people love it very watery and just like a pinch of milk. जैसे मेरी दोस्त है वो ऐसे पीती है, उसको टी बुलाती है, उसको चाय भी नहीं बुलाती। So, टी? हाँ, तो then बैंड्रा से है वो? हाँ। So I don't consider that to be chai. Chai is what? What is chai to you? ओ भाई साहब, चाय इमोशन है यार, है ना? चाय इमोशन है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली इन आवर कंट्री, आई डोंट थिंक आई हैव एवर स्पोकन अबाउट चाय इन एनी पॉडकास्ट, बट एवरीबडी हु नोज मी नोज माई लव फॉर इट। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, और पीछे जाके तो बचपन में नहीं दी जाती थी। इट वॉज अ फॉरबिडन फ्रूट वाइल ग्रोइंग अप, कि बड़े लोग सब पी रहे हैं आपके आसपास चाय और आप मांग रहे हो तो आपको दूध बॉर्नविटा और ऐसी कोई चीज़ हाथ में थमा देते हैं। तो मैं सोचता था कि क्यों नहीं, नो, एंड आई यूज्ड टू आस्क फॉर इट ऑल्सो एंड दे विल बी लाइक नहीं एंड जैसे कि नहीं रंग चेंज हो जाता है आपका, एंड आई डोंट नो सम रैंडम रीजन। करेक्ट दे यूज्ड टू गिव यू, एंड बट माई नानी स्टार्टेड गिविंग मी ओकेजनली लाइक अ सिप और टू, कि हाँ ठीक है हफ्ते में एक बार के लिए थोड़ा सा। सो इट बिकेम लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर मी ऑफ सॉर्ट्स, कि कुछ अच्छा किया मैंने हफ्ते भर में तो मुझे थोड़ी सी चाय पीने को मिली। एंड वंस आई वाज ऑफ सर्टिफाइड एलिजिबल ड्रिंकिंग एज व्हिच वाज चाय ड्रिंकिंग एज। क्या होता है चाय ड्रिंकिंग? पता नहीं। आई थिंक जब बोर्ड्स में होते हो आप 10th में, हाँ, और आप रात को पढ़ाई करते हो, तो तब आपको बड़े इज्जत से सामने से चाय बना के, ये बढ़िया एक्सक्यूज है, लेकिन ये बढ़िया एक्सक्यूज है कि देखो पढ़ाई नहीं हो रही है बेटा, क्या चाहिए? चाय चाहिए। पिला दो एक कप। तो मुझे 2 बार मिलती थी। फिर एक तो मैं सवेरे भी उठता था 4-5 बजे, तब भी मिल रही है हाथ में बनी बनाई बढ़िया चाय। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट यूज्ड टू बी माय एक्सक्यूज टू वेक अप अर्ली आल्सो। अदरवाइज आई एम नॉट, आई डोंट, हु लाइक्स गेटिंग अप एट 4 AM until some people who have a lot of motivation. और रात को भी मिल रही है। मैंने कहा भाई अब तो अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। So I think, and from there, of course, then it became part of life in a way which has a lot of sentimental value. Then for the longest time after that, my breakfast used to be chai paratha, जो मैं बैठ के घर वालों के साथ खाता था, and that was the bonding time. कॉलेज गए, कॉलेज में दैट व्हेन यू डूइंग थिएटर, म्यूजिक इन कॉलेज, यूथ फेस्टिवल एंड ऑल ऑफ दैट, तो चाय इज अ कांस्टेंट कंपेनियन। इनफैक्ट हर आधे घंटे में चाय आ रही है एंड दे आर पोरिंग इट इन योर कप, एंड दैट्स द ओनली वे टू सस्टेन थ्रू द डे एंड रिहर्सल। यू नॉट इवन ईटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नॉट ईटिंग, यू जस्ट गोइंग थ्रू योर डे with a cup of chai. So it's been a constant companion. I think it's been the most loyal companion. चाय ने साथ नहीं छोड़ा। चाय ने साथ नहीं छोड़ा। और ना ही मैंने छोड़ा चाय। खूबसूरत। चाय
सबसे बढ़िया चाय कहाँ मिलती है बॉम्बे में? मेरे घर पे मैं बनाता हूँ। और किसी चीज का पता नहीं कहाँ पी कॉन्फिडेंस सकते हैं लाइफ में है कि नहीं, बट चाय बनाने का कॉन्फिडेंस, चाय कौन बनाने का गुरूर है। गुरूर है, हाँ इस चीज का तो है। दूरों दूरों की बात छिड़ी गई है, तो भाई एक लाइन हो जाए, एक दो लाइन हो जाए। बिना इंस्ट्रूमेंट के, हाँ। सोचूं के मिलनी ते बुलांगा की तेरी तां गल्लां च शायरी वेखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्के दी गलियां च खोया है दिल वे आस लगाए कि जाए तू मिलवे कोल तेरे मैनू आन दे सोनी करा मैं कितने चतन सोनी। गाते रहो भाई। मैं तो खो ही गया एकदम। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट आर द टू लाइंस दैट आर रिटन एकदम नीचे। Oh, यू स्टार्टेड विद दैट। yeah. That's my favorite part of the song also. It's beautiful. I don't know. I just wrote these two lines here, and you that's started exactly with that why line. I ended with that also. Yeah, beautiful. सोचू के मिलनी ते बुलांगा की तेरी ता गल्लां ते शायरी देखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू ता परी। क्या है थॉट इसके पीछे? इसके पीछे थॉट ये है कि कभी कभी आप किसी के लायक नहीं समझते हो अपने आप को। यू लव somebody so much that you probably don't even want to be with. You're just so happy to love them, and you think probably you're not even capable of their love in some or the other way. Or maybe, like the way I see it, it's very longing kind of a love. It does not even have to exist in the same era. For example, how Mira's love for Krishna was just pure devotion, and that kind of love is important for you more than the other person. Like you love being in that state of mind and heart and love कि मुझे मजा आ रहा है भाई, ये सामने मिले ना मिले तो वही है कि पता नहीं, मैं अगर मिल जाऊंगा किसी दिन तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूँगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि whatever you say sounds like शायरी to me. And मैं मिट्टी का बंदा हूँ and you're like an angel. So the contrast is huge, but still that doesn't have to be the reason for not to love you, you know. तो वैसा आई थिंक कहीं तो ये बोला था दैट यू लव लव। I love love. I think it's beautiful. और हाँ, समझ नहीं आता अभी भी, और ना ही अभी समझने की कोशिश करता हूँ मैं. It's just a beautiful state of living. Yeah. Beautiful. I think you were mentioning about अगर आप if the heart wants what it wants, and if you go ahead and find practicality in love, you'll keep finding. Yeah. वो मिलेगी ही नहीं आपको. और love, I think, is pretty stupid. It is. It is probably the stupidest thing you'll come across. No, absolutely. And you know, the more I'm experiencing it, the more I'm realizing that it doesn't even, like you said, doesn't have to be perfect. It is stupid. And it's not even the one definition that everybody keeps feeding you. It's a very selfless kind of a feeling. It's ऐसा है. नहीं यार, प्यार में ईगो भी होता है, प्यार में गुस्सा भी आता है, प्यार में आप सर्वाइवल लेवल इमोशंस भी एक्सपीरियंस करते हो, एंड एट द सेम टाइम यूर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस ब्यूटिफुल काइंड ऑफ डिविनिटी. It's such a huge gamut of emotions that you feel, and one should not deprive themselves of it, and it keeps evolving, it keeps changing, and there is no logic, there is absolutely no logic. Like वही है ना, इश्क सोच के किता देखी किता. And contrary to that, I realized every time I've fallen in love, I have kind of rationalized it so much. I've tried looking for reasons. I've tried to push people away. But after a point, you're like, nahi, I don't have to.
do that anymore. I don't have to look for reasons anymore. अब है तो है. Feels good. Feels good. But like you mentioned again, it's not. It doesn't have to be practical. Yeah. ठीक है. But how do you convince your heart that maybe it's not happening? जहाँ आप वो किसी के तरफ जा रहे हो, it could be an object, it could be a female, it could be a male, it could be anybody else. Yeah. It could be human being, it could be a plant, it could be anybody else. But you love that particular thing or person, and you know maybe something tangible is not possible with that person. Yeah. How do you convince your heart that You can't. ठीक है, कोई बात नहीं, it's not possible, but I still love that person? You ask ChatGPT. That's what I've been doing lately. Asking ChatGPT to kind of convince me that the decisions I'm making about my love life are right. And ChatGPT will always tell you what you want to hear, not the truth. That is true. It's so biased. That is true. You say ChatGPT, मुझे ऐसा लग रहा है, बोले हाँ भाई बिल्कुल सही लग रहा है. सही लग रहा है. 2 मिनट बाद तुम बोलो मुझे वैसा लग रहा है, बोले भाई बिल्कुल सही लग रहा है. So you ask ChatGPT, and I mean, jokes apart, I feel there is absolutely no way you can deal with it. You can redirect that energy into something that you want to, but if you kind of push it aside, उसको अभी के लिए आप दूर रख दो ना, वो बाद में निकल के आता ही है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं. So I believe in living it completely, feeling it, not distracting myself, not trying to go on to some app and kind of giving myself a quick dopamine. No, I like to sit with it. I like to see what's happening with me, and it's not always like the nicest and the most beautiful feeling. Also, you feel something here, like literally यहाँ पे वो बोलते हैं ना, heartbreak actually feels like something so heavy here. But you live with it. You live with it for some time until your entire system comes back on a neutral state. How difficult is acceptance? Tough है भाई. है ना? I think acceptance of someone else totally depends on the level of acceptance of yourself. मतलब आप अगर खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो तो दूसरों को भी नहीं कर पाते हो. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, if you're somebody who sees faults in others, you are seeing way more faults in yourself. Because that's the kind of conditioning you've done with your mind to seek faults and not accept fully. So that's one bit that I've also actively worked on for the longest time, because I've also not, all of us, we're constantly fed information on the internet, offline, from hoardings to newspapers, that you're not enough. You buy this car, you'll be enough. You buy this house, you'll be enough. You buy this shirt, jeans, and you'll feel better about yourself. So you're constantly being fed information which will make you doubt yourself, and which will make you feel like competing with your friends or whoever you're around. तो acceptance उस sense में ना becomes difficult. You have to sit every day and tell yourself. Like for me, the easiest way to feel loved and accepted by my own self is I ask a question. Ki, if I could trade my life with anybody on this planet right now, my complete life, will I do it? Will I choose somebody else's childhood? Will I choose somebody else's parents? Will I choose to be born as a different race, ethnicity, different country? And the answer, Deepak, every day is no. I wouldn't want to be anybody else. I would love to be who I am. I would still choose the same house that I was born in, the same parents. It's not been perfect, but I would still choose the same exact story because I love it. And if I don't want anybody else's life, then why would I want to change myself? Especially, I'd love to congratulate you for the for Botla. Botla is fantastic. It's one of my personal favorites. I don't think I think it's a very underrated song. Yeah. Do you agree? Yeah. It's a very underrated song, especially the intro. आप
भाई मतलब क्या कुछ करते हो आप ब्रेथ वर्क के लिए, क्या करते हो आप आवाज़ के लिए? इट्स ब्यूटिफुल. द इंट्रो इज व्हाट इंस्पायर्ड मी टू राइट दैट piece that I wrote. And It was lovely what you wrote and what you shot also was beautiful. thank you, thank you. So I wrote that, and I had tears in my eyes while I wrote that because it was a personal story. Yeah. And I was like, wow, this is beautiful. So thank you for inspiring me to write that, man. This was beautiful. And especially वो जो line है ना, वो ठोकरा में खाई कर कर थकिया इश्क जाए मजा और की, वो क्या क्या है वो line यार? वो it's about stupid love, right? Yeah, it is. It is. And it's about not giving up. Like every time I go through a terrible heartbreak and my friends think कि अब हो गया इसका अब नहीं करेगा ये अब कुछ नहीं करेगा ये and then again but I don't give up on Love. yeah I don't why should I Why do you write about love? I love this feeling. I think I don't know if there's an answer to that in the sense ki why I don't know what else to write about. But I feel it like it's such a wholesome emotion on its own. Like I said, it has everything under it. It has anger, ego, sadness, happiness, joy. It's like an umbrella emotion for all of these. So it kind of I don't know. I feel very connected to it. आप सोचते हो रील डालने के पहले कि अरे यार इसमें ये रील में इतने व्यूज आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, मैं ये डाल देता हूँ? मैं नहीं सोचता. नहीं सोचते हो? I honestly don't. क्या बात करते I हो? just my only measurement is if it's truthful or no. If I've made songs in the past which I made on a template. मुझे किसी ने बोला था कि अच्छा इंट्रो इतना लंबा नहीं होना चाहिए, बीट इतना जल्दी आ जाना चाहिए, आपका गाने का कोरस 1 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए. एंड आई फॉलोड दैट टेम्पलेट एंड इट वाज अ वेरी गुड सॉन्ग बट डिडंट फील ट्रू. आई डिडंट रिलीज. कौन सा गाना है? नहीं रिलीज ही नहीं किया मैंने. अच्छा, आप ही का गाना है ये? हाँ मेरा खुद का गाना. पर रिलीज ही नहीं किया? नहीं. इट वाज चेकिंग ऑल द बॉक्सेस लॉजिकली वर्किंग really well for everybody who heard it, but I knew that was not why I do what I do. It'll become a trend probably, but I don't want to. बट ये तो चलो परेश भाई, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. ये तो आप चलो ऐसा है कि ये आपका खुद का गाना है तो यू कैन टेक अ कॉल कि यार चलो ठीक है, ट्रूथ नहीं फील हो रहा या आई डोंट फील कनेक्टेड. यू ऑल्सो मैंशनड आई थिंक पहले दैट यू थ्राइव ऑन कनेक्शन, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मैजिक हो, चाहे वो आर्ट हो, एनीथिंग दैट देयर इज कनेक्शन इज व्हाट यू थ्राइव ऑन. बट मेरे को बताओ, ये तो आपका गाना है तो यू कैन टेक अ कॉल योरसेल्फ कि चलो ठीक है यार मज़ा नहीं आ रहा, रिलीज नहीं करते हैं, चलो ठीक है. देयर आर मोर पीपल इन्वॉल्व. देयर इज अ लेबल इन्वॉल्व फॉर एग्जाम्पल, और देयर इज अ मूवी प्रोड्यूसर इन्वॉल्व, और अ डायरेक्टर इन्वॉल्व, और अ साउंड गाय इन्वॉल्व, एंड बोल रहा है कि नहीं यार ये तो रिलीज करना पड़ेगा. डू यू ऑल्सो देन थिंक? No, I don't even take it to somebody. Like that's a beauty of making music. Ki it starts with you. Something starts with me at 3 a.m. in my living room with a guitar or my piano. What I do with it, whether I want to put it out in the world or no, the choice remains with me. And even now at a point with films or with whatever I do, it's a choice that I make. Ki if it resonates with me, if it connects with me, I will do it. If it doesn't, then it's okay. अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि कुछ भी आपने नहीं किया है जो आपसे रिलेट ना किया हो? Which is why I've done fewer projects. Probably, I don't know, maybe it's not a very wise career. टाइगर जिंदा है में क्या रिलेट हुआ आपको, क्या कनेक्ट हुआ? यार टाइगर जिंदा है में मुझे it was lots of things actually. Lots of nostalgia. I grew up, my first film that I ever saw in theater was Karan Arjun. So grew up watching Salman Khan and Shah Rukh Khan, and they were the heroes for us. They were not actors, they were the heroes. Family bonding time, popcorn, samosa, single screen theater used to be Shah Rukh Khan, Salman Khan. That was one. Working with Yash Raj films was a dream because for 2 years I used to have chai outside of Yash Raj and keep staring at their logo. कि मैं एक दिन ये जो ब्लैक गेट, एंड आई यूज्ड टू सी दीज लग्जरी कार्स गोइंग इन, गेट ओपनिंग, एंड और मैं मेरी पल्सर बाइक पे
खड़ा रह के, पल्सर थी उस टाइम आपके पास? हाँ उस टाइम पल्सर थी, खड़ा रह के उस पर चाय पीता था ना, जस्ट कीप लुकिंग एट द गेट कि एक दिन ये दरवाज़ा मेरे लिए भी खुलेगा. So and then when I read the part, when I auditioned for 2 rounds, and then they gave me the script to read, and while reading that, it felt like something. It felt like कि it's coming from the right space, in the sense कि whatever the writer was trying to say through Azan, through that part, कि basically the main crux of that character was कि Azan was a Muslim and he still had to prove his patriotism just because he was a Muslim and he was in the army and he was doubted कि, you know, and that I felt was a very strong point to bring, and it felt very truthful. So I'm like, yes, why not? आप क्लीन शेव नहीं करते हो? करता हूँ कभी कभी. क्या है मूड, क्या है क्लीन शेव करने की? आज फील हो रहा है कि कोई सॉन्ग की डिमांड है, परफॉर्मेंस की डिमांड है, तब करते हो? मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा क्लीन शेव, पता नहीं क्यों. आई डोंट. बच्चे टाइप लगते हो इसलिए? बच्चे टाइप नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द लुक. मुझे हल्का सा स्टबल, हल्का सा imperfection पसंद है, even when it comes to looks and clothes and hair and everything. It should never be like perfect, fully perfect. Yeah, I don't know. I feel it's important to leave a little imperfections and few things here and there. Yeah. अच्छा, क्या कमाल आदमी हो यार. मतलब गाने परफेक्ट बनाओ लेकिन जीवन में नहीं. अगर आप सुनो ना, सच्ची में we really, me and my team and I correct grammar. ICC से हो आप? नहीं भाई. कहाँ से हो? CBSE से हो? नहीं. W भी बोल रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड से हो? हाँ जी, बड़ी सिंपल स्कूल से सिंपल सी पढ़ाई है. नहीं, बट सॉरी, योर क्वेश्चन, I'll forget that point. Imperfection. हम जानबूझ के म्यूजिक में भी we leave a lot of human elements. एक्सप्लेन कर दो, कनेक्टेड विद योर सॉन्ग एंड एक्सप्लेन. हाँ जी, जैसे कि बोतला पर अगर आप सुनोगे, ब्यूटीफुल, that was recorded live. It's not a studio recorded version. It was recorded live from a concert. Every instrument that you hear in that song is recorded live. Every artist has brought in their own life and emotions to that song. Even the new songs that I'm working on right now, we've recorded a live orchestra. Although the entire soundscape बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा अगर हमने कंप्यूटर से किया होता उसको या म्यूजिक प्रोग्राम किया होता. इट साउंड्स एग्जैक्टली द सेम, बट आई फील when a live musician brings in their own human touch, अगर कोई अपनी 30 साल का ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है एंड प्लेइंग वायलिन, इट विल कनेक्ट. एंड लॉट ऑफ टाइम्स ये चीज़ें a lot of people don't understand. They're like, oh, but this is way more expensive, this is way more time consuming, you can just make the entire song on a computer in 3 hours. Why do you want to spend a month making with various musicians around the country and the world? We hear it, when you hear a human little imperfection कि एकदम बीट पे नहीं है चीज़, थोड़ा आसपास है उसके, या एकदम मतलब just leaving a little noise of the strings or little guitar का उसमें यहाँ से यहाँ फ्रेट चेंज हो रहा है, उसका हल्का सा नॉइज़ है. I love leaving those in my songs. I don't clean any of those things. And even in live, we make sure it's as raw as possible, at the same time very pleasing and very connecting. बाकी वो पता नहीं, it's a personal taste. I think art is all about taste and you have to have a very. और बताओ ना, गाना वो परफॉर्मेंस कैसे क्यूरेट करते हो आप इन टर्म्स ऑफ लाइक आई वुड, मेरी एक ख्वाहिश है कि आप वो बोतला का स्टार्ट एक बार कर दो, जो वॉइस ओवर है आपका. वो चाय वाला पार्ट जो आप करते हो, वो इट्स ब्यूटिफुल. लाइक आई हैव हर्ड दैट, जस्ट फॉर दैट बिट आई हैव प्लेड दैट सॉन्ग ऑन लूप कि यार ये वाला पार्ट बहुत सुंदर है. तो अगर आप वो कर दो एंड देन मे बी एक्सप्लेन. बिल्कुल. तुम्हारी गैर हाजिरी अब खलती नहीं, क्योंकि मैंने चाय बनाना सीख लिया है.
ठीक उतनी अदरक डाली है जितनी तुम डालती थी, इलायची भी ठीक उतनी, पर फिर भी वो स्वाद नहीं है. खैर छोड़ो, शायद चाय को भी तुम्हारी आदत है. And of course, like I said, chai was a very important part of everything I've done. And in relations also, you know, having chai with your partner is one of the most beautiful moments of connection. So it came from there. It came from there ki, you know, once that ritual was no longer there and you were missing that person, but you don't want to say you're missing someone, so you say, no, I'm not missing you. Because I know how to make chai, but it's never about the chai. Of course, it's never about the chai. It's never about that, yeah. Wow, it's never about the chai. It's a nice line. है ना? It's never about the chai. It's the Get t-shirt, it's never about the chai. Woo! commerce, art and commerce. That's what we do. But यार ये बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है. So when you so especially in your performances, what I've seen is you do a lot of it's not just, obviously there's a lot of crowd interaction, audience interaction, but it's not limited to just that. It's like you have a lot of voiceovers or some lines in between, and then you just say that line and then you again continue with the song. Yeah. So was there a thought behind this when you do live performances, or was it inspired from somewhere, or is it just that you capitalize on your God gifted voice and you're like, हाँ ठीक है, ये कर लेंगे, कुछ तो मजा आ जाएगा, फीमेल ऑडियंस बहुत क्रेजी हो जाएगा. अरे भाई, नहीं यार, इतना क्या नहीं था वो सोच थॉट? रहा वो था. क्या है थॉट? हाउ डू यू प्लान योर परफॉर्मेंसेस? व्हाट आई एम आस्किंग. The whole concert, I'll invite you next time we do a voice notes concert, is my journey basically, and my love story that I've experienced put together. So, and also while I was growing up, there used to be cassettes जब गानों के साथ साथ voice notes और scenes होते थे पूरे कि कहो ना प्यारे का एक कैसेट है, उसमें गाना है, फिर वो पूरा scene है, फिर गाना है, फिर dialogues हैं. So I was like, I want to create an experience like that because nostalgia, childhood. And also people kept asking me, acting or music, what's your first love? I'm like, it's both. And if you see the concert, it's both. It's like a movie unfolding on stage where you are a part of the film, where you are part of the story or the play or musical. So it's a blend of both, and which is why it's everything that I personally love, which is poetry, music, acting, and live music, all of it. Yeah. इतना कुछ thought नहीं था. What's been your craziest performance so far? Oh wow. I don't know how to. And crazy could be good, crazy could be bad, crazy could be weird, crazy could be anything. I've been very lucky so far. अभी तो मतलब अभी जर्नी शुरू हुई है, तो it's just been beautiful experiences. But बताओ ना कुछ live performance story बताओ ना कुछ. Live performance stories ऐसे कुछ crazy नहीं हुआ है, but I met a fan in Bombay or Delhi, I think Bombay, who had a tattoo of Botla, which was ठोकरा में खाई फिर भी नहीं रुकिया इश्क दा मज़ाहुर की. That was one. I've got beautiful letters, handwritten letters from, and that's what I love, because all these are old school things which I thought were, you know, कौन करता है आजकल ये, but it's beautiful to be receiving handwritten letters and people saying that, you know, how this kind of music has kind of healed them, healed them from depression, from anxiety, from loneliness, from and which is why this sense of connection is so important while performing, while making music, because it's rare to find. You know, if you can make somebody feel a little less lonely in their own bedroom, it's important, I feel. But I think Delhi wala jo show tha hamara Talkatora Stadium, that was quite a crazy show. It was because like it was independent tour, ना हमारे पास कोई sponsor था, ना हमारे पास कुछ ऐसे कमाल के resources थे. But when we announced the tour and tickets were selling slowly, and by the time it was time for the Delhi show,
the entire stadium was packed. It was fully sold out, and there were hundreds of people waiting outside for more tickets, which we didn't have. And it ended up being like, yeah, I still have. वो थ्रिल के बारे में बताओ, स्टेज थ्रिल के बारे में बताओ यार मैं I can live on stage. I can sleep on stage. I love it. I just can't wait to go back on stage every time I'm not on stage. I don't know. And like, just to give you the context of why it happened so late in my life, कि last year 2024 में things weren't going great in terms of acting or waiting for the roles and waiting for the right kind of things. And you feel, when you are waiting, you feel very powerless. And I don't like that feeling. Nobody likes that feeling of waiting and feeling powerless. So I'm like, when was the last time I felt really amazing, magical and empowered? And the flashes I got were from my college days, when I used to be on stage for performing, doing a play or singing in a band, or doing youth festival. I'm like, that was the time I felt invincible. I'm like, क्योंकि ना तो उस वक्त उस चीज़ के कुछ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था. It was just the pure joy of being on stage and rehearsals and building something. And I'm like, okay, if that's the answer, these are the visuals that keep coming back to me, then I have to explore that. And that's when I called my band, who's now my band, but they were friends at that time. I met them during the shoot of Bandish Bandits. So, and I'm like, please come over. They came over and we started jamming, and I'm like, I want to perform, I want to go on stage. They're like, we are with you whenever you want to do that. In 20 days, we were on stage, which was the first Voice Notes concert, and we recorded, and that kind of went viral. So that's what I feel on stage. I feel magical. I feel like I'm above the ground. I feel connected to thousands of people in that single moment, and vice versa. They feel connected too. And then after first 5 minutes, there is no stage. There are no people. It's just all of us are like in one big house party. Everybody's just having fun. It's beautiful human experience which I love. आप जानते हो कि ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे? पता नहीं. नहीं पता, अभी तक नहीं पता. नहीं पता करना है. नहीं पता करना है. पागलपन जरूरी नहीं है आर्टिस्ट के लिए. बिल्कुल जरूरी है ना. जावेद साहब का एक वीडियो देखा था मैंने रिसेंटली, वेयर ही सेज कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप में कुछ कमी है. yes, this went viral a bit recently. Yeah. And I really feel that, like, if you are normal and feel fulfilled in your life, in all areas of your life, I don't know if the hunger to create will be that strong. I would love to believe that, I'm normal and I still want to create, but पागलपन है तो सही है ना. जरूरी भी है. मेरे हिसाब से वो इम्परफेक्शन, वो थोड़ा सा ना पागलपन, वो थोड़ा सा बचपना, मेरे को लगता है ये सारी चीजें बनाती हैं. वर्जन्स है ना सबके नॉर्मल के. लाइक what might be crazy to someone might be absolutely normal to me, or what looks like absolutely normal to rest of the world might not be normal for me. Like when we look at normal, we are like, ये तो बड़ा बोरिंग सा नहीं है. फैमिली में किससे क्लोज सबसे ज्यादा? अगर वो लोग देख रहे हैं, इतना सोचना पड़ रहा है. नहीं, उनके बारे में सोचना पड़ता है कि इस वक्त उनके दिलों की धड़कनें. क्या मेलोड्रामेटिक आदमी है. तो नहीं, मतलब अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो मैं सोच रहा हूँ कि आप क्या होते भाई. इतना मेलोड्रामा भाई एक आर्टिस्ट में ही हो सकता है मेरे हिसाब से. क्या मम्मी, वो लोग अगर देख रहे हैं, सीधा जवाब तो देना ही नहीं. 7 करोड़ वाला एंटिसिपेशन चल रहा है इस वक्त. नहीं, मम्मी for sure. मम्मी, I think boys are always little more close to their mothers, no? Which brings me to my next question. What's your relationship with your father been like? It's been nice, actually. It's been nice, but also, like, the more I grow older, the more I realize that fathers of our generation, their love language was very different. Like their love language is in actions. They may not talk much. They may not have much to share about their day.
but they will show you in smallest of actions. Like, कि अब मैं जब घर जाता हूँ, and I've shared this before also, I think, and I might have briefly mentioned कि मुझे ये फ्रूट पसंद है या मुझे ये बेवरेज पसंद है. अब मैं जब भी जाता हूँ वो फ्रिज भरा होता है उन चीज़ों से, and I'm like, अरे मैं 2 दिन में इतना तो ऑब्वियसली खा भी नहीं पाऊंगा, but things like that. And now I'm actively, every time I go back home, I actively spend time with my father, and I ask him questions about his childhood or how did he grow up, and I love seeing the look on his face where he's revisiting the memory lane and talking about times that were so different than now. I think that empathy is also required from our side, because the current methods of therapy, etc., kind of blame parents a lot for everything. But if you just sit with them and have a conversation and understand where they come from, what kind of schooling did they have, what kind of opportunities did they have, you will understand. They too didn't even know of mental health and therapy and all of that, and then you'll empathize with them a lot more. शौक क्या है आपके? शौक ही हैं ये सब. क्या है शौक? मतलब ऐसा अतरंगी शौक क्या है? कोई स्पोर्ट हो, कोई कुछ करना हो? अतरंगी शौक भी वही है ना, सब कुछ, everything relates to this love of my life, which is music. अतरंगी शौक ये है कि I pick up random musical gadgets and instruments from wherever I go. क्रिकेट खेलना पसंद है बहुत ज़्यादा. So now I'm actually basically I realized कि हम उस एज पे हैं जहाँ पे we are actually kind of fulfilling all our dreams and desires from childhood, जो उस टाइम पे नहीं कर पाए. क्रिकेट कोचिंग, I wanted to be a cricketer at some point in life, वो नहीं हो पाया. So now I've started training properly with season ball. अच्छा. हाँ, उस मतलब I love playing cricket in the nets and कहाँ खेलते हो? यही अंधेरी में. अंधेरी में नेट्स है? हाँ, I'll tell you. Come next time. अच्छा. And I have bought a kit. तो वैसे fulfilling all my childhood dreams. किट खरीदना कितना क्या है वो, है ना, वो इमोशनल है भाई. वो कुछ और ही है. मतलब आई थिंक एक किट बैग खरीदना फॉर समबडी हु इज सच अ बिग क्रिकेट फैन और वांटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया मे बी एट सम पॉइंट इन टाइम इज समथिंग that makes you a little emotional also, because you're like, हाँ यार ये खरीद रहा हूँ, बट ये इससे शायद मैं प्रोफेशनली ना खेल पाऊँ वापस. That's okay. बट शायद बट फॉर द लव ऑफ द गेम. फॉर द लव ऑफ द गेम. मामा आप भूल जाते हो ना, मैं जितनी देर नेट्स में होता हूँ, यू कांट अफोर्ड अनदर थॉट. अगर गलती से भी किसी और चीज़ का ख्याल आया तो निकल जाएगी बॉल. फास्ट आती है. ये मेरे साथ अभी हुआ, पता है. मैं संडे को गया था खेलने, एंड आई प्ले विद द फ्रेंड्स. वो बॉलिंग मशीन लगा के हम खेलते हैं, और मैं पूरा ऐसे पैड अप हूँ खेल रहा था, और वो इतना, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे उस टाइम. इट्स नेवर हैपेंड दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड आई हैव सो मेनी थॉट्स, बट आई हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स देन. और मेरे को जो बॉलें लगी है टांगों पे, बाप रे, मतलब मैं पैड्स पहन के खेल रहा हूँ, लेकिन इतनी जोर से लगी कि पैर सूज गया है. अपनी स्पीड लिमिट भी ऐसी 125 130, तो मैं वो स्पीड से खेल रहा था. तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है? बट देन just the love of the game keeps you alive. You train yourself. You train your mind. I think it's the best way to train your mind, to get your dopamine spike and your rewards from these small things. So that's what I'm doing consciously this year. कि जिन चीज़ों में मज़ा आता है, जिन चीज़ों का कोई प्रोफेशनल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा मुझे, वो भी करो. मैं वो भी करूँगा. And I'll do them as sincerely as I do my work, as sincerely as I do other things. So cricket भी मैं हफ्ते में 2-3 बार अच्छे से जाके वो 2 घंटे forget everything and I just play in the nets. उसका कुछ आउटकम नहीं है. ना मैं कभी इंडिया के लिए खेलूंगा, ना मैं कभी नेट्स में खेलूंगा. शायद मैं किसी की बायोपिक कर दूँ, वो अलग बात. आपने मेंशन भी किया था. बोलो ना ओपनली. मैं तो मैनिफेस्ट हो जाए. हाँ, विराट कोहली की बायोपिक करनी है आपको. लव टू डू अ विराट कोहली बायोपिक, है ना. मैंने तो हाँ बिल्कुल. तो फेस सिमिलैरिटीज से लेके बियर्ड सिमिलैरिटी, हाइट सिमिलैरिटी, सब मैंने ऑलरेडी विजन बोर्ड पे डाला हुआ है. मैं हाँ, मेरे को भी करना है. बैटिंग स्टाइल भी आपको भी करना है. दोनों में से एक को मिलेगा. 2 पिक्चरें बन सकती है यार, वो पीछे देखो, है ना. That will be one of the scenes in the film. I think this is the room where I think where both of us have a lot in common. Yeah.
पीछे देखो, पीछे 2 कप चाय लगी है. ओए होए, उसके पास में there's this word called kintsugi, which is a Japanese concept. It's about embracing the imperfection. वो टूटे हुए बोल्स को जोड़ते नहीं है. Yeah. So it's about embracing. I know this concept. I just forgot the name. मुझे हाँ, it's called kintsugi. it's beautiful. So वो broken pieces को they embrace the broken pieces because it's part of life as well. अगर आप जोड़ दोगे तो फिर उसमें मजा क्या है? Exactly. So they keep it that way. Here is our legend, our master. कमाल है यार. नेटवर्थ के बारे में सोचते हो? नहीं भाई. नहीं. एक सर्टेन नंबर है जो मुझे पता है. देखा नहीं आपने कभी गूगल सर्च नहीं किया परेश पहुंचा नेटवर्थ? नहीं भाई. करते हैं आज. क्या बात? परेश पहुंचा सॉन्ग्स, कॉन्सर्ट, मूवी एंड टीवी शोज, वाइफ. परेश पहुंचा वाइफ. बहुत सारे आ गए. नहीं रुको मजाक ये यही प्रॉब्लम है मेरा. परेश पहुंचा नेटवर्थ. देखते क्या लिखा है. पेज नॉट फाउंड. Exactly. मुझे खुद को नहीं पता भाई, इनको कैसे पता होगा. नेटवर्थ का आ गया रिजल्ट. बताओ. $11 मिलियन बोल रहा है भाई. कितना होता है? $11 मिलियन 100 करोड़ रुपए होते हैं. हंस दिया आपने. 100 करोड़ रुपए होते तो यहाँ बैठा होता. नहीं फिर भी यहाँ बैठा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है. मजाक कर रहा हूँ, मजाक सेट की बात कर. I really wish that comes true though. $11 मिलियन. अच्छा सुनो, ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट नहीं है. $11 मिलियन और ब्रैकेट में क्या लिखा है? एज ऑफ 2015. ये 10 साल पहले की बात है. तो शायद मैं किसी महाराज का बेटा हूँ, मैं शायद उज्जैन का प्रिंस हूँ, मुझे पता नहीं. आप अपनी लीनेज चेक करवाओ एक बार. मैं चेक करवाता हूँ. शायद मुझे बताया नहीं है कि मैंने इतना इनहेरिट किया हुआ है पैसा. मैं I'll just do my background. बट जल्दी से बताओ लव लाइफ के बारे में, फटाफट बताओ. आई नो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वील सॉर्ट ऑफ रैप इट. यार मेरी लव लाइफ कुछ तो है जो आप ऑब्वियसली लव के बारे में इतना लिखते हो. देयर इज something. Of course there is love बताओ. life. There have been different love stories. There is a love story that I'm living right now as well, and there are different emotions that I'm experiencing right now as well, and it's beautiful. All the emotions are beautiful. There are highs and lows and ups and downs, and I still, and I love it. I love all of it. I don't know what else to tell you about it. Like, it's beautiful. It's beautiful. It's painful at the same time, because your mind plays games with you. But it's lovely. You are in love. I'm always in love. Even when I'm single, I'm always in love. Are you single? I'm single. I'm single, but I'm in love. दूरों में. क्या पोएटिक आदमी हो भाई, मजा आ गया. Pick a song, sing 2 lines of your song. It could be Duro Duro, it could be Botla, it could be Ishq, it could be Mascara, it could be anything. Okay. Go for it. आ जाओ. तेरा तो पता ना कोई है ठिकाना, रब नू लभना नी मैं होर जी. बोतला मैं खाली कर कर थकिया, तेरे आगे नशा होर की. ठोकरा मैं खाई फिर भी नहीं रुकिया, इश्क दा ऐ मजा होर की. Beautiful bhai, beautiful. मतलब I consider myself honored that I'm able to listen to you live in front of me, a live performance in front of me as far as the audience is also concerned. I've heard your songs on loop, and it has inspired me, it has touched me, it has impacted me to write myself again. And I think if that's not impact, I don't know what impact is. You've inspired a forgotten writer to pick up his pen once again and start writing again, and that is something which probably is the greatest validation an artist can ever receive. So thank you so much for doing that. Thank you. I think I needed this more than you. Thank you.
The last question that you want to ask me, and then we'll wrap it up. This is the format of the show. If you can ask me one last question that you want to ask me, and then we'll end it. What impact do you want to give? Eradicate or probably curb poverty. वो एक चीज़ है जो शायद मेरे बहुत पर्सनल है. आई डोंट थिंक आई एवर सेड इट बिफोर. थिंक दैट इज़ वेरी 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 पर्सनल. जो मतलब people who are in need of money, and I don't think I want to make x amount of money, which is great, but not for my own upliftment after a certain point in time. Right. I want to live a comfortable life. I don't want to ever think कि यार ये होटल इतना महंगा है या ये रेस्टोरेंट इतना महंगा है, ये फ्लाइट इतनी महंगी है, तो मैं आई वॉन्ट टू लिव दैट मच लाइफ कि हाँ ठीक है यार, चल इतना पैसा बना लिया, बहुत बढ़िया है. अब क्या किसी और को अपलिफ्ट कर सकते हैं? बिकॉज I grew up very introverted. I grew up very underconfident when I was in school, when I was early part of college as well, back in Calcutta. और किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये भी हो सकता है जो आज हो रहा है. किसी ने नहीं बताया था. शायद वो पोटेंशियल रियलाइज किसी ने करवाया नहीं था. और I think a lot of people inspire me. Zakir Khan inspires me every single day. He recently did Madison Square Garden in New York. Filled out the entire freaking stadium, and then there's one beautiful line he says औकात से बाहर का सोच लेना चाहिए. कभी कभी मिल जाता है. So true. So I think that is something that I'd love to sort of do. Maybe make people realize their potential and their dreams, and they can also do what they're capable of. Sometimes you're just bogged down by a lot of external noise कि यार नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा. अरे तो हो पाएगा, तू करना भाई. तो शुरू तो कर. I think that is something that I'd love to sort of propagate. Beautiful. And do something like that. Beautiful. I think you're already doing it, not just through this podcast. Like you also told me the story of a college that you went to. Yeah. You gave somebody hope there. And I think eradicating poverty or financial problems, it doesn't mean giving money to somebody. Yeah, true. If you can educate them on how to make it, it's like, वो एक कहावत है ना कि you give somebody food. हाँ वही है कि अगर मैं आपको मछली दूंगा नहीं, आपको मछली पकड़ना सिखा दूंगा. हाँ बस वही कहावत है यार, मैं कहाँ पे भूल जाता हूँ. So yeah, I think that's the best way to do it. Yeah. Educate them on how to do it for themselves. Amazing. Awesome. Thank you so much Paresh bhai for taking our time and doing this. This was wonderful. बहुत ही personalized और बहुत ही personal feel हो रहा है. Feels very intimate. The connection maybe that I have with you, with whatever you've shared, whether it's cricket or chai or imperfection or movies, it feels very personal. So thank you so much for sharing your story with the audience and with me rather. Your last thoughts of how you felt coming on the show, कैसा लगा experience पूरा on that camera, outro कर दो. बहुत ही chill feel हो रहा है मुझे. This didn't feel like an interview or a podcast. I think this was a conversation with a friend that I needed. Instead of sharing, I felt sometimes you need a reminder to yourself about the things and the dreams and the visions and the goals why did you start in first place? And I think today is one of those days for me. So thank you, Deepak. Thank you, Chilar, for bringing that out. And I had a great time. Thank you. Awesome. Thank you so for the much. Chai. ABC, thank you for the chai. By now, I'm sure ABC knows. But thank you so much, guys, for tuning into the episode. I hope you had a wonderful time listening to Paresh bhai. It's pretty interesting conversation. मेरे को बहुत मजा आया. At some point, I was sort of transported to some other place where he was talking about a few things. Also, he's very profound, by the way. I don't know if you've known by now, but I'm pretty sure you must have known by now. But comment down your most favorite part in the comment section so that we know what more to talk about. We have a second channel called Deepak Parekh Clips where we post short snippets from the main episode on that channel. Check that out as well. And yeah, keep chilling, keep supporting. See you next Friday, same time, 6 p.m. with a fresh new episode. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.